Your WhatsApp message to Kabaddi Ashwin says, check now, bro, I am talking. Ready to send it? Yes. Check, 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 check. Okay, it's sent. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, check, check.
ओके तो वंडरफुल शुरुआत की तरफ एक बार हम फिर से चढ़ चुके हैं, भूल चुके हैं और जा चुके हैं। तो चलिए मैच नंबर 96 की सीधी यहाँ पर वार्तालाप कर लेते हैं। युवा कबड्डी सीरीज जोश जज्बा और जुनून के साथ तैयार है। ये मुकाबला होगा मैच नंबर 96 अरावली एरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स। तो चलते हैं इस मुकाबले के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप की जाए। अरावली एरोज तीसरे पायदान पर मौजूद है, 12 मुकाबले 6 जीत 5 हार और निश्चित तौर पर प्रयास यही करेगी कि जितने ऊपर समाप्त कर पाए उतना ज्यादा बेहतर होगा। और वहीं पेरियार पैंथर्स दूसरे पायदान पर मौजूद है, चाहेगी कि अपने बचे हुए मुकाबले जीते और पहले पायदान पर समाप्त करने के लिए थोड़ी सी राह को बढ़िया बनाया जाए। और एक अच्छा मुकाबला है, दोनों टीम्स लगभग यहाँ पर चैलेंजर राउंड की तरफ बढ़ चुकी है और बड़ी आसानी के साथ अपना स्पॉट बना चुकी है। और आज का दिन बड़ा लाजवाब रहा। पहला मुकाबला पंचाला प्राइड एक बहुत बड़े मार्जिन से जीता, दूसरा मुकाबला काजीरंगा राइनोस 14 पॉइंट से जीता। यानी कि ये दोनों टीम निश्चित तौर पर एक बड़ा मुकाबला करेंगे। परंतु अगला जो मुकाबला है वो है अरावली एरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स और इसके बाद खेला जाएगा हम्पी हीरोज वर्सेस मुरथल मैग्नेट्स पर। चलिए अभी समय है इस मुकाबले की शुरुआत का, दोनों ही टीमें को मैच पर बुला लिया जाए। तो लेट मी फर्स्ट इनवाइट अरावली एरोज। और चलिए यहां पर अरावली एरोज को टक्कर देने आ रहे हैं हमारे पैंथर्स का पूरा ग्रुप। सो लेट्स इनवाइट पेरियार पैंथर्स। तो स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का मैच नंबर 96 में जो खेला जाएगा अरावली एरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स में। यानी कि दूसरे पायदान पर मौजूद है पेरियार पैंथर्स और तीसरे पायदान पर अरावली एरोज। टॉस का समय है, देखना होगा टॉस का बॉस कौन रहने वाला है, किस तरह से सिक्का उछलेगा, किसके पक्ष में गिरेगा। कॉल जरूर हुआ है और चलिए यहाँ पर अरावली एरोज के लिए अच्छी रही है शुरुआत। टॉस जीतकर कोर्ट का इन्होंने फैसला लिया है और चलिए फैसला हम लेते हैं कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करने का नवीन शौरी को। और तौसिफ अहमद, महेंद्र चौधरी और लोकेश गुजलिया यहाँ पर मौजूद है। सब्स्टिट्यूट की बात की जाए सुमित चौधरी, अंकित जाट, विष्णु साहू, युवराज सिंह और दीपांशु यादव। और वहीं पर अगर हम पेरियार पैंथर्स की स्टार्टिंग 7 की वार्तालाप करें तो आज यहाँ पर आपको कुछ बदलाव फिर से देखने को मिले हैं। रिंकू, अनिश, रमन को आज निरंतर मौका है। उज्जवल, क्या आज उज्जवल प्रदर्शन दर्शा पाएंगे? मोनू जाकर, नितिन जागलान और अंकित सुरेंद्र यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और सब्स्टिट्यूट्स में आज यहाँ पर आपको कुछ बड़े नाम आपको निश्चित तौर पर नजर। मुकाबला है दोनों टीम्स के लिए, जहां पर अरावली एरोज चाहती है कि टॉप 3 में समाप्त करे और वहीं पर पेरियार पैंथर्स क्या नंबर 1 पोजीशन की तरफ एक बार देख सकते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर दोनों ही टीम्स की बात की है तो दोनों ही टीमों में बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार से लबरेज है। परंतु फिर भी अगर वार्तालाप की जाए कि आज किस खिलाड़ी पर सभी की निगाहें होगी, किस तरह से आज दोनों ही टीम प्रदर्शन करना चाहेंगे, प्लेयर टू वॉच आउट की भी बहुत सारी चर्चा की जाएगी। Yes, Arshad, lot of coordination and lot of talking definitely. And for the men to watch out for, it is going to be Anish there for the Periyar Panthers, where it's very, very important for them to probably make sure they go ahead and win this without Ashish Natwal. But for the Aravalli Arrows, it is very important as their captain Kapil Gurjar will be once again tested for his captaincy skills, and also Ram Kuwar, who's got that 74 rate point for the Aravalli Arrows, will be really important to support Gangaram. And also, not being just a support, I guess he's become the lead raider of this entire unit of Aravalli Arrows, isn't it? जी हाँ बिल्कुल, राम कुमार आपको लीड रेडर के तौर पर नजर आएंगे। बीच में इंजर्ड हुए थे जिसके चलते कुछ मुकाबले खेले नहीं थे। और नवीन, जिस तरह से आप बात करते थे यहाँ पर
कि आज रिंकू को एक बार फिर से मौका मिला है बतौर कप्तान। और पेरियार पैंथर्स के अगर हम स्टैट्स की बात कर लें तो 20 मुकाबले इन्होंने ओवरऑल खेले हैं, 15 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबलों में हार का सामना जरूर करना पड़ा है। और आज यहाँ पर पेरियार पैंथर्स की एक बार फिर से परीक्षा होगी। और वहीं पर आपसे जानें किस प्रकार का प्रदर्शन अरावली एरोज का रहा है। Aravalli Arrows, see again, they were kind of lagging behind in that survival round, but then when the booster round came up, they got their act together, they found that winning combination, and now they are trying to seal that third place in the booster round. It's all nice for them, but when their defense play well, they really do well. That is more important. It all relies on Kapil Gurjar and Govind Gurjar. Now, let's go in for that all-important countdown to begin this match. So Harshit, the monsoon is here, and I guess Jaipur has got a little colder, isn't it, from last 2 days? जी हाँ, बिल्कुल ठंडी हवाएं, ठंडा सा सुरूर और मौसम बड़ा बेईमान हुआ है। परंतु यहाँ पर देखिए इस खेल में आपको बिल्कुल भी ईमानदारी दर्शानी होती है, बिल्कुल भी बेईमानी चलती नहीं है। और नवीन, वहाँ कैसा है मौसम, आपसे जानते हैं। It has been a lot of traveling around from every place, Mumbai to Bengaluru, and everywhere for all the cricket matches that just went by. And unlucky that we could not get a match yesterday on the decider, and the series had to be drawn from the South Africa and India, both of them winning 2 points. But as a draw, as I always say, I do not like it either in kabaddi or in cricket. So I just want somebody to go ahead and win. It's nice for the game, because both the teams put up their best performance, and now Ram Kuwar is getting his best foot forward and getting that running hand touch on right cover. It was really nice extension of the right arm, and then once again the right cover does not go back in time. That is the problem, where in the covers, if the covers are not playing well, and we just saw Anish there in the right cover, who was supposed to be the men to watch out for, also along with Rinku. And now look at that, left cover making a mistake, and it's going good, the experience. और इक्वलाइजर अब होता हुआ नजर आएगा। देखिए वहां से कवर से गलती हुई, इसके बाद अब एक बार फिर से कवर से आपको गलती होती हुई नजर आएगी। गोविंद गुर्जर शुरुआत से पकड़ बनाना चाहते थे रेडर पर भी और इस मुकाबले में भी। और जिस तरह से हमने बात की थी जब राम कुमार की, तो आज ये बतौर मेन रेडर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, लीड करते हुए नजर आएंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा था। ज्वालाराम गंगाराम ने जरूर अच्छा प्रदर्शन किया था, और इस बार देखिए फिर से बहुत अच्छा रनिंग हैंड टच यहाँ पर किया है। क्या नितिन जागलान को अपना शिकार बनाया है राइट कॉर्नर से। Very swift running hand touch, because Nitin Jaglan could not even control that pace at which he was going back, and that's why the chain also was let go, and it was a very swift running hand touch. Now Rinku, the captain of Periyar Panthers, and I'm somewhere a little relieved to see even in the substitution list there is no Ashish Narwal's name there. नवीन, देखिए मुझे ये तो पता है कि थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, चलिए उस दिशा को हम बढ़ाएंगे आगे। नवीन शर्मा जरूर यहाँ पर अंदर आए। नवीन, देखिए मुझे ये तो पता है कि आप में एक ट्रांसमीटर सा जरूर लगा है, परंतु आप दूसरों को ऐसा लग रहा है कि दिलों की आवाज भी ले लेते हैं। मैं भी अभी आपसे यही जानना चाहता था, और आपने तुरंत उस टॉपिक को ले दिया कि आज आशीष नरवाल सब्स्टिट्यूट में भी इवन नहीं है। चलिए, हालांकि लड़कों के दिलों की आवाज मुझे कम सुनाई देती है, but still, yeah, let's concentrate on the game. But Rinku again is now once again being in that captaincy position. He's got a very good angle towards him, because I'll tell you something. Govind Gurjar is out, and he's going and trying in with Jwalaram being there, and that is not the way where I want to see Gangaram to be transforming himself into a defender. See, that is what I was trying to tell you, Harshit. Jack of all trade, master of none. So you can be the jack in every trade, but you need to also win the rose in one trade that you can do, isn't it? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि आप जिसमें सर्वश्रेष्ठता आप दर्शाना चाहते हैं, जिसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ, परंतु चलिए इस बार तौसिफ अहमद उतनी ही यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के साथ यहाँ पर आपको रेड पर जाते हुए नजर आए, थोड़ा सा अनसेटल करने का प्रयास किया। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है।
पहले आप जो कार्य टीम द्वारा आपको सबसे पहले फिर से डिफेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया अरावली एरोज के। Yeah, Kapil Gurjar now getting the angle right, and Monu Jaka was completely surrounded, and he also went in for the outward turn, which was really important around him, and made sure he did not go to the midline. And there see Gangaram with the assist. It's nice, and a diving angle hold from the left corner. That is nice to see. Ankit Surinder gets his point. Ram Kuwar has to go back. Once again, this is the issue with raiders like Ram Kuwar and Sonu Latwal. They tend to be little slow. They tend to be little slow on that turn, on that running hand touch or toe touches. This is what we want to see. Rinku was swift. Rinku was fast. And that's the reason right corner Mahendra Chaudhary has to go back now on the bench. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन कि वो जब टर्न लेते हुए जिस तरह से आपने रिंकू के वो तेजी देखी, बहुत ही तेजी के साथ मिड लाइन की तरफ एक बार फिर से बड़ी आसानी के साथ क्रॉस कर गए, अपनी टीम को एक पॉइंट भी दिलाया। और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आशीष नरवाल के एब्सेंस में जिस प्रकार से रिंकू ने अपने आप पर दावेदारी ली है, अच्छा प्रदर्शन करने की ठानी। और क्या इस बार यहाँ पर गंगाराम एक पॉइंट लेते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर अच्छी शुरुआत गंगाराम को मिलती हुई, ये अच्छा लग रहा है देखकर कि राम कुमार को एक अच्छा सपोर्ट अब ज्वालाराम के तौर पर, गंगाराम के तौर पर मिल सकता है। Yeah, definitely. See, because that is his strength. So you concentrate on keeping Gangaram as your second raider. Or else tell me, along with Tosif Ahmed and Ram Kuwar, who's your another raider who will get you points? And look at that. Once again, Govind Gurjar, not at all in the form today. Once again, a very weak tackle. Goes in for the thigh hold, but goes in very low with two hands and does not get Rinku for the speed that he's got. And once again, it is Ram Kuwar. So he'll have to make sure. Yeah, that is nice. That is nice. But once again, the pace in the turn is very, very slow and not in front of a top defender of the Yuva Kabaddi Series like Naveen Sharma. And a very, very simple ankle hold. It was like as if he was practicing on the mat. बिल्कुल, और नवीन शर्मा के विरुद्ध ऐसा लगा कि यहाँ पर चलिए जिस तरह से मछली को फंसाया जाता है, आने दिया उन्हें अंदर और बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर एंकल होल्ड किया। और अब यहाँ पर रिंकू, ये इनमें वो तेजी नजर आती है, वो स्पीड जिसको आप लुकआउट करते हैं कबड्डी के मैट पर, वो इनमें बहुत सारी एस्केपिंग स्किल्स भी इन्होंने दर्शाई। और इस बार भी देखिए, ये यहाँ से एक और बार गलती नजर आएगी और रिंकू लगातार आज अपनी एस्केपिंग स्किल्स के साथ मिड लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही देखा यहाँ पर डिफेंडर उनकी तरफ कूद कर आ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर मिड लाइन की तरफ अपना फोर्स बनाया, मोमेंटम बनाया और आसानी के साथ एक और पॉइंट प्राप्त किया। And also what he did was he did not allow the defender to come for his ankles, and that was really well done by Rinku. But now look at Jwalaram beginning to get some points for Aravalli Arrows. Raman, who was there in the left cover position, could not come across. And even in the previous occasion where Gangaram was raiding, and we call him Jwalaram because for everybody watching in their comfort of the houses or offices or anywhere they are on fan court, should know that Jwala is the chili. It's a mirchi that is grown in Gujarat, very hot and spicy, and it's generally served and eaten raw with delicacies like vada pav and usal pavs and all that. So the raid of Gangaram looks like he is like on fire, and even that chili or mirchi is very short in nature. Okay, it's just a small mirchi, but very, very hot and spicy. That is what Gangaram is. That's why we just call him Jwalaram, just for our love towards him. And he's been very, very true to that name, because in the previous raid he got Raman, but a raid prior to that he got Anish with a kick. And getting a kick on the right cover as a left raider is very, very difficult, because he'll have to go in very deep, and he executed it to perfection. And once again, Rinku will go back empty-handed against 4 men on court. जी हाँ, रिंकू इस बार फिर से यहाँ पर रेड पर थे, एम्प्टी हैंड जरूर गए। और इस मुकाबले से पहले जिस तरह की रिंकू के पास 128 रेड पॉइंट्स है, इस बार तौसिफ अहमद, ये अच्छे रेडर हैं, ये लगातार अरावली एरोज के लिए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से अपनी टीम के लिए यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट यहाँ पर लेकर आएंगे। बहुत अच्छा रनिंग हेड टच, बहुत ही तेजी के साथ, और वहां पर शिकार बनाया है लेफ्ट कॉर्नर अंकित सुरेंद्र को। जिस तेजी की हम बात कर रहे थे, वो तेजी तौसिफ अहमद में जरूर नजर आती है। कई दफे जरूर आपको स्लोनेस नजर आती है, परंतु वो अपना फुटवर्क अच्छी तरह से दर्शाते हैं। अब अच्छा फुटवर्क दर्शाना होगा यहाँ पर
नंबर 8 जर्सी उज्जवल को आज मौका मिला है। कपिल गुर्जर वहां पर मौजूद है। इस मुकाबले से पहले 64 टैकल पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं और इस बार भी यहां पर शानदार टैकल, बहुत अच्छा सिंगल थाई होल्ड पर गए, बहुत अच्छा सपोर्ट लेने की वजह से जरूरत ज्यादा पड़ी नहीं, परंतु एक शानदार टैकल। Do or die raid pressure on Ujjwal. That was what done him in. And then Kapil Gujjar also keeping himself very low and going for the tackle. And that's a double thigh hold from Naveen Sharma against a very strong raider like Ram Kuwar. Strong in terms of skills and also in terms of the build that, he is a little stronger than Naveen Sharma. But look at that. Perfect example of a double thigh hold. Get in front of the raider, cut his angle out to turn and just block him together. This is a wrong example of an ankle hold. As simple as that. Tausif Ahmed's job is to go get the touch point. And why do you have to do this when you were raiding so well and you've given a confidence booster to a raider who was not getting a point at all. Monu Jakar is got some taste of the raid points as Gangaram comes in, goes in for the kick. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि तौसीफ को वहां पर आवश्यकता इसकी थी नहीं। अब गंगाराम भी यहाँ पर लेफ्ट रेड के साथ और नवीन के चंगुल से कैसे बचेंगे, ये बेजोड़ बेमिसाल नवीन है और क्या बात है, क्या नवीनीकरण भी कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर एंकल होल्ड की ग्रिप नजर आ रही है नवीन, क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बेजोड़ प्रदर्शन के लिए। He is rewritten the defensive skills of any right corner, and he always reminds me of Mohit Chiller, because Mohit Chiller also very good in back holds, very good in ankle holds, and of course Mohit Chiller was not completely in control when it comes to thigh holds. But now look at this for a super tackle that is coming in for Aravalli Arrows, and somewhere they inch closer to that lead, and it was a nice diving ankle hold by Mahendra Chaudhary, and somewhere the raider for the Periyar Panthers thought that he can clean them up, but you need the pace. You just need the pace. You can't just keep thinking. That's why I said he thought of cleaning up, but then the thinking was there, the speed wasn't. बिल्कुल आपने सही कहा वहां पर नवीन। और अब चलिए गोविंद गुर्जर के पास यहाँ पर मौका है कि रेड कीजिए, रेड में कुछ पॉइंट लाने का प्रयास करेंगे। ये होती है चपलता, ये होती है तेजी, मोनू जाखड़ का पूरी तरह से ध्यान है। और देखिए 77 नंबर जर्सी ने 77 नंबर जर्सी को आउट किया है यहाँ पर मोनू जाखड़। 177 showing the highest level of agility and also adrenaline rush. The other one not there at all, not there in the game at all. And I'm feeling today Govind Gurjar is still not left his hotel room mentally. बिल्कुल, क्योंकि आपको पूरी तरह से अपना, चाहे दिमाग हो या फिर शक्ति हो, बल हो, आपको अपनी स्किल्स के साथ साथ पूरी तरह से मुकाबले में रहना होता है। और यही चाहेंगे कि अब गोविंद गुर्जर थोड़ी देर मैट पे बैठे हैं, थोड़ा सा सोचेंगे, एक बार फिर से एक नए पॉजिटिव इंटेंट के साथ मुकाबले में वापसी करेंगे। मोनू जाकर सिर्फ इस बार एम्प्टी रेड करते हुए आए, क्योंकि जानते हैं कि महत्वपूर्ण यहाँ पर रेड हो सकती है। अभी तो चलिए कपिल गुर्जर, कोई मेन रेडर मौजूद नहीं है अरावली एरोज के लिए, शायद मैट पर कोई बड़ा मेन रेडर मौजूद नहीं है, जिसके चलते I'll tell you what, Harshit, now Kapil Gurjar has to go in for a touch point or a bonus, or else if the next raid would have been a do-or-die raid. But that is really well done by the Aravalli Arrows captain. He went in very deep and also got Anish from that left cover this time, because for a left raider becomes a little difficult to get that left cover, but that's the reason why he went in so deep and that running hand touch was effective. Now 4 men on court, and they have put away the do-or-die raid, but if Rinku does not get a point, the next raid for the Periyar Panthers will be a do-or-die raid, and the clock is ticking down. This is going to be interesting. I should see a very quick raid from Ram Kuwar now. He has to just go try and just come back within that specific 15 seconds to go, or rather even 10 seconds to go for the raid. He will go in and try and get a touch point. Is it? No. That is very well controlled. Really good control by Monu Jakar. He was actually thrown out of the chain, but then controlled himself to be inside the end line. And now he comes in for a do-or-die raid.
जी आप देखना कंट्रोल उन्होंने डिफेंस करते हुए अच्छा दर्शाया Oh, था इस बार oh, क्या 2 पॉइंट्स come हैं on. यहाँ फिर कितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर मोनू जाकर देखिए सबसे पहले किक लगाए उसके बाद शायद कपिल गुर्जर को यहाँ पर शिकार बनाया क्या यहाँ पर 2 पॉइंट्स जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे पहले एक शानदार हाई किक लगाई उसके बाद कपिल गुर्जर ने शायद पकड़ने का प्रयास किया तो वहां पर शिकार बनाया लोकेश गुजलिया जरूर शायद मैट पर हैं तो क्या महेंद्र चौधरी को जाते जाते उन्होंने टच किया Yeah, maybe because I will once again go ahead and apologize to all our fans on fan code watching this Yuva Kabaddi Series with lot of intention and lot of excitement. And that's a solo tackle. Come on, that's the tackle of the match for me. That is really well done by Anish. And he went in low, he went in strong. He got the bonus to Ram Kuwar. But Anish, what a tackle that was right in front of the back line. And of course, Ram Kuwar was a tall raider, and now that has pushed the Aravalli Arrows for an all-out, and Rinku will clean up very easily. What a tackle! That's the tackle of the match for the Periyar Panthers. And I was just saying, Arshad, I'm just apologizing for a little technical error here to all our fans on fan code watching this live. We have a little glitch in our replays today, so it's not coming through very correctly, very smoothly and efficiently, so we're just working on that and it will be back soon. So please bear with us, please pardon us because what happens in such tackles, you really want to see the replays. And me also, as a very big fan of Kabaddi, I just want to see Anish's replay once again, but we'll make sure we will come back very soon on this, might be in the next match or even tomorrow when there are 4 matches to go. So we're just working very hard towards that. So it is our duty to even go ahead and apologize to all the fans, Arshit, isn't it? Because everybody will be expecting that top quality of production. And as this top quality of raid from Monu Jakar has got another point, and Mahendra Chaudhary with a very weak tackle has to go back on the bench. जी हाँ इस बार जरूर यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और नवीन बिल्कुल आपने खूबसूरत बात कही वहां पर कि देखिए जो धर्म की हम बात करते हैं उसमें भी शायद लिखा गया है बड़े हमने पुराण हो या फिर वेद हो या फिर बड़ी यहाँ पर ग्रंथ हो उनमें भी लिखा गया है कि क्षमा मांग लेना और साथ ही साथ अपोलोजाइज करना जिस तरह से वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है एक बहुत बड़ा दरिया दिली कहते हैं और उस दरिया दिली के साथ आपने बिल्कुल सही तरह से दर्शाया कि बहुत ही जल्द हम रिप्लेस के साथ वापसी करेंगे क्योंकि अनीश के हम टैकल की बात कर रहे थे अनीश को जरूर इस बार शिकार बनाया है वहां पर राम कुमार ने जरूर और पिछली बार जिस तरह से यहाँ पर एक बार तो ऐसा लगा था बड़ी आसानी के साथ शायद राम कुमार मिड लाइन को क्रॉस करते हुए नजर आ जाएं परंतु जिस कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर आया अनीश में और लगातार जाने नहीं दिया बिल्कुल अपने चंगुल में फंसा सा लिया था और बहुत अच्छा टैकल था वो बिल्कुल आपने सही कहा अभी तक का मुकाबले का सर्वश्रेष्ठ हो सकता था अगर गोविंद गुर्जर लगातार यहाँ पर गलतियां कर रहे हैं और एक और पॉइंट यहाँ पर रिंकू के खाते में This is somewhere is a big weak link for the Aravalli Arrows. Because for an experienced defender like Govind Gurjar, if he is committing mistakes, and I haven't seen a single successful tackle from him yet, and we are just 2.5 minutes to go for the first half, and it is not a very good sign for Aravalli Arrows. And look at this for a combination tackle once again. Anish, he is so good in the block. He is so good when it comes to ankle holds, but he has to somewhere learn to also retrieve himself from the tackle position or from the attacking position when the raider is coming to you from the running hand touch or kicks. So that is the only way that Anish can become an unstoppable a defender. And now once again angle cutaway and Monu Jakar being tackled very easily with a combination tackle. जी और नवीन इस बार देखिए कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर चेन टैकल लेकर आए थे लोकेश गोसलिया शायद ऐसा लगा कि क्या थोड़ा सा ज्यादा आगे चले गए और शायद इसलिए आगे गए थे कि उस एक्शन को यहाँ पर कट करना चाहते थे एक्स्ट्रा अगर कहीं गैप नहीं देना चाहते थे बहुत अच्छे अंदाज से चेन में फंसाया यहाँ पर मोनू जाकर को हालांकि मोनू जाकर अभी तक 5 पॉइंट यहाँ पर जरूर प्राप्त कर चुके हैं अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आज स्टार्टिंग 7 में इन्हें खेलने का मौका मिला है और अरावली एरोज के लिए यहाँ पर 2 टैकल पॉइंट्स कपिल गुर्जर को मिले हैं 2 महेंद्र चौधरी को मिले हैं तो अभी भी यहाँ पर गोविंद गुर्जर को आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें अभी तक कोई भी सक्सेस होता हुआ नजर आया नहीं उनका टैकल और लगातार रिंकू को डैश करने में लगातार ऑफ कोर्ट जाते रहे हैं See again, my worry is that you're playing Gangaram
as your right cover, and that is the problem where Rinku gets a very very easy point, and Lokesh Gosalia comes to block. How can a corner defender come to block in front of the block line so unknowingly of the fact that he cannot even cut the angle of the raider? He can just do the outward turn and keep on going. And see, now Gangaram comes to raid and he's got a kick on Naveen Sharma, and he has to go back. He went in for the ankle hold. Naveen Sharma was low, but the jwala of Gangaram, the hot and spiciness of Gangaram just getting Naveen Sharma there. So see, once again, see, that is my worry. I was just trying to say, where Kapil Gurjar was standing in the right in position, you are playing Gangaram as the right cover. Now you are playing him as the left cover, and Kapil Gurjar goes in with the chain and blocks him. This is fine when you have the successful tackle in your way. The problem with Aravalli Arrows is they need to really tell their defenders their role, the very simple role. And now Gangaram is raiding. He's got another kick once again, and he's got Anish this time. Similar fashion how he got Naveen Sharma, and he goes. It does not have time to relax. He does not have time to think and regain his energies. He just needs to again be involved in the defense. Look at that. That is something which bothers me a lot, because as a raider you need to come back into the defense and relax your brains and think. And see, that is why there are so many errors. And Kapil Gurjar also. You'll have to think. You'll have to sit back and think in the defense and regain your energies. I do not know when will Aravalli Arrows do that. They are the only team trying to shuffle so many positions in the defense. And that's the end of the first half. और 22-16 के साथ यहाँ पर पहले हाफ के बाद बढ़त बना रखी है पेरियार पैंथर्स ने, और आशीष नरवाल मौजूद नहीं है। नवीन शर्मा ने जरूर यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आए। अपनी टीम में स्टार्टिंग 7 में नाम नहीं था, और बिल्कुल आपने सही कहा कि अरावली एरोज लगातार अपने प्लेयर्स में यहाँ पर बदलाव करते हुए नजर आए हैं। लगातार उनकी एक स्थिर पोजीशंस आपको नजर नहीं आई हैं। और देखिए, रेड पॉइंट्स यहाँ पर 14 प्राप्त किए हैं पेरियार पैंथर्स ने। 10 रेड पॉइंट्स अभी तक इस मुकाबले में मिले हैं। अरावली एरोज के लिए टैकल पॉइंट्स बराबरी पर हैं। ऑल आउट यहाँ पर जरूर करते हुए नजर आया है पेरियार पैंथर्स अरावली एरोज को। और चलिए, आज नवीन, हमने मैजिकल मंडे की बात की थी, तो जिस तरह से शुरुआती 2 मुकाबले हमें देखने को मिले, पहला मुकाबला पंचाला प्राइड जीता है और दूसरा मुकाबला काजीरंगा राइनोस जीता है, तो उन पे कुछ आपकी खास टिप्पणियां और कितना उन दोनों जीत का महत्व अंक तालिका पर होगा, नवीन, बड़ी जल्दी से आपसे जानता हूं मैं। Yeah, definitely. See, it's very, very important that they maintain those places, and the big wins, the differentiation in the wins also matter a lot, because what happens when you have so much difference in the win margin, it gives you that advantage, isn't it? And also, just finishing up on the top of the table, especially in the top 3, will also give you some extra cash prize going into the challenger round from the booster round. So yeah, just coming back to this match again. So the tackle points are all similar, and thanks to the raiding there from Monu Jakhar and Rinku, that there are 4 extra points, and that is the point that they also lead from, with 1 all-out also inflicted. So we'll just take a short little break, and we'll come back to see if Aravalli Arrows can have a fixed position in their defense and try and do better in the second half. Welcome back everybody on Fancore, and today we are in that phase of the game where we are almost getting our top 6 teams from the booster round to the challenger round from Sanskar School Jaipur, our venue partners, and we also are very thankful to our physio partners UAM, who've always been there for all the support that we need to get players in shape. And if the injury is a little more worrying and concerning, we do have Metromas, the hospital partners, along with Dr. Abhishek Gupta, the surgeon of joint replacements and sports injuries. And then FM Tarka is there to say Apni Suno. And then now Ram Kuwar goes in and says, right, ab mere bhi thodi sun lo. And that back kick on the left corner
gets his first point of the second half. Look at that. It was really nice. The defender did his best, but I would have wanted Naveen Sharma to come across and cut the angle out because he was very deep. He was very deep into the crease. And now something to cheer about. It is nice to see. See what happens if you really apologize from heart and say, okay, I will try and rectify the error. Is happy news that our replays will be back very soon, and in this match I was expecting that our technical team will sort it out in the next match, but then look at the production qualities and production skills, and also thanks to all the hard-working hands and brains behind getting the EVS machines back. That's what I keep saying always. It's good to know for our viewers also. The replays come from something called a EVS machine, and now like a EVS machine we have Ram Kuwar taking away 2 more points in a similar fashion that he did in the first half. Check this out for a replay, Harshit. सराहनीय कार्य यहाँ पर राम कुंवर का भी और हमारी प्रोडक्शन टीम का, जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर लगातार कड़ी मेहनत के पश्चात यहाँ पर एक बार फिर जो ग्लिच था उसे दूर किया गया। और क्षमा, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर दिल से मांगी जाती है तो भगवान उसे तुरंत एक्सेप्ट करते हैं और तुरंत उसका निवारण करते हैं। इस बार लोकेश गोसलिया ने यहाँ पर निवारण किया है। इस बार यहाँ पर एक शानदार एंकल होल्ड, और क्या निवारण यहाँ पर शंकर ढूंढ कर लाए हैं। फर्स्ट हाफ के बाद से अरावली एरोज, एक नया अरावली एरोज नजर आ रहा है। जो लीड थोड़ी सी ज्यादा थी उसे एक बार यहाँ पर कम करते हुए नजर आए हैं। और लीजिए आप अरावली एरोज यहाँ पर इस मुकाबले में क्या पहली दफे अब आपको यहाँ पर लीड करते हुए नजर आएगा कुछ समय के बाद। बहुत अच्छे अंदाज से पेरियार पैंथर्स को यहाँ पर ऑल आउट कर दिया है। Yeah, 1 point lead, all important lead for the Aravalli Arrows, and it is really important now for the Periyar Panthers, because after the first half they've not even got a single point, and once again a diving ankle hold from Kapil Gurjar and his trusted lieutenants. They're coming in very correctly. Govind Gurjar and Kapil Gurjar, the Bhaichara of the Gurjar Bhais, coming into good effect. Even though it was so well in front, now Govind Gurjar is cutting the angle for the Raider and is not allowing them to go towards the midline. Actually, not even a single point. Not even a single point for the Aravalli, for the Periyar Panthers in the second half. And Aravalli Arrows have come out in the second half like big, sharp mountains. जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर इस मुकाबले के सेकंड हाफ में वापसी करते हुए नजर आए। और देखिए 6 जने मौजूद हैं उनके कोर्ट पर, उसके बावजूद यहाँ पर नवीन आए हैं रेड के लिए। थोड़ा सा क्या मोमेंटम को स्लो डाउन करना चाहते हैं, बिल्कुल मिडिल ऑफ द कोर्ट जाकर बोनस लेने का प्रयास किया है और जरूर वहां पर रेफरी ने मना किया है। परंतु जी हम बात कर रहे थे उस गुर्जर भाईचारे की, उस टैकल में क्या सबसे बढ़िया था नवीन, जिस तरह की आप हमेशा बात करते हैं कि जब आप कवर को यहाँ पर परंतु तौसीफ अहमद कहेंगे जो हो चुका है उसकी बात करने का आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अरावली एरोज अब लगातार कुछ ना कुछ नया करते हुए नजर आएगी। एक शानदार रनिंग हैंड टच और जिस तरह से यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया वो सच में लाजवाब था, काबिल तारीफ था नवीन। Ankit Surender is struggling. Ankit Surender definitely is struggling there on the left corner for the Periyar Panthers. But Monu Jakar has been good. And now, see the ankle hold. Not a problem. Not a problem. Good effort. Good effort by Lokesh Gosalia. And also Monu Jakar kicking and pushing himself towards the midline. Good that the covers stayed back. Yeah, that is nice. That is nice. And who was there in the cover? It's the regular pattern. It's the regular position of the Gurjar Bhaichara. Simple. No confusions with Gangaram standing here, Kapil standing somewhere, Kapil somewhere standing in the in position, then going behind the defense line to create some confusion to the Raider. Why so much effort? Nice dash, and that's the second point only in the second half for the Periyar Panthers. They've got the bonus though. They've got the bonus though. That's nice to see. Ram Kuwar does not allow the score to change too much. Right cover coming in across, and Anish once again showing his skills in the dash. और अनीश का एक बहुत ही पावरफुल डैश था, क्योंकि बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर राम कुमार मिडलाइन की तरफ जाना चाह रहे थे, अच्छे अंदाज से डीप गए थे बोनस से। बिल्कुल आपने सही कहा कि थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा समय वहां पर राम कुंवर हो या फिर सोनू लथवल होने लगता है। और इस बार क्या यहाँ पर I know this was coming. Harshit, sorry, I know this was coming. Why? Just tell me why. Yes, because you saw that Gurjar Bhaichara ka chain where they were standing.
They're standing in the left flank of Kapil Gurjar playing in the left in, and Govind Gurjar being the left corner. I mean, why? When you have 5 men on court, this is a nice raid when Kapil Gurjar gets that kick. I really want to see where that defense is now, and I will tell you if the raider will get the point, Ujjwal, for the Periyar Panthers. He will not get a point in this raid. He will not get a point in this raid because it was the proper position of the covers. Both Gurjar Bhais in the left and right cover, and Lokesh Gosalia with the ankle hold. Look at that. Simple, basic kabaddi, Harshit. बिल्कुल। और कभी कभी नवीन इसी की हम बात करते हैं ना कि कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा कुछ करने की चाह में अक्सर अपने बेसिक को भी मिस कर देते हैं। वो अरावली एरोज यहाँ पर फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में एक गलती जरूर करते हुए नजर आए। इस बार नवीन शर्मा का ये अच्छा डैश है, और अब पिछली रेड में हमें नजर आया उज्जवल को अगर पिन डाउन किया गया तो प्रॉपर पोजीशन थी। और बिल्कुल आपने सही कहा है नवीन की, अगर आप इतिहास भी उठाकर देख लें, इन दोनों के मुकाबले उठा के देख लें, तो जब जब गोविंद गुर्जर और कपिल गुर्जर साथ में रहे हैं तब बहुत ज्यादा डेंजरस रहे हैं, तब यहाँ पर रेडर्स को लगातार धरा दबोचा गया है। अभी ये प्रॉपर है 77 और कपिल गुर्जर। Yeah, this is nice. See, you have that understanding why always keep spoiling it. See, that's why Rinku also goes back empty-handed. But look at Naveen Sharma in the previous tackle that he did. He is very, very good in terms of corner defender coming in for the dash. And now with the chain, and this is Ram Kuwar's power, where he breaks the chain. He actually pushes Naveen Sharma away from his right hand, and then that's why the chain got released and broken, and he got the space to go towards the midline. And thank you so much for our EVS operators who got this back online. Look at that. He just pushed Naveen Sharma away, and then that's the reason the chain was broken, and Ram Kuwar could get through the midline. I'm sure it's just 2 points. Yeah, no problem. Sumanji just confirming that with her colleagues, which is nice. But then 2 points. It was clear, and it has been confirmed. Look at that. Look at the way he pushed Naveen Sharma. बिल्कुल वहां पर चेन में आ रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर पुश किया, चेन को तोड़ने का प्रयास, और उसके बीच में से यहाँ पर निकले और बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर 2 पॉइंट प्राप्त किए पेरियार पैंथर्स। अब 5 पॉइंट से पिछड़ चुका है। फर्स्ट हाफ में अच्छी लीड उनके पास थी। रिंकू को कुछ कारनामा करना होगा, और रिंकू के पास वो स्विफ्टनेस मौजूद है। जिस तरह से यहाँ पर रनिंग हैंड टच लाते हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर रनिंग हैंड टच किया। देखना होगा किसे क्या इनके खिलाड़ी गंगाराम को शिकार बनाया है। Gangaram again was in the right place of the left in. Of course, Raiders proper place, and he should have seen. I understand when you are in your proper place, but do not come on. Joseph Ahmed easily gets a point in the fashion of Ashish Narwal. Says नहीं मेरे पैर मत छूइए, चलिए रहने दीजिए. Look at that. That's what happened. That is a beautiful skill, and it is I will say this is a Indian culture raid. जी हाँ बिल्कुल। और देखिए बिना मांगे जब आशीर्वाद मिल रहा है तो क्या मांगने की जरूरत है। बिल्कुल इसी तरह से कह देते कि चलिए कोई बात नहीं बेटा, मिल जाएगा आपको। और देखिए नवीन, ये थोड़ा सा हमें पुराने दिनों की अगर हम बात करें, जिस तरह से बचपन की अगर हम बात करें, हमारे घर में फैमिलीज में जब कोई आता था तो हम उनके पाँव छुआ करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि हमें इन रिटर्न में कुछ पैसे मिलने वाले हैं, कुछ रिवार्ड मिलने वाला है। तो उस तरह की चाह में 100%। अरे बिना कुछ फायदे, मतलब क्यों जाके मतलब तकलीफ उठाना है। नहीं यार, कम ऑन, लगता नहीं वही इच्छा और चाहत से जाते थे हम लोग। नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम दैट। और चलिए उतनी चाहत के साथ यहाँ पर राम कुमार फिर से यहाँ पर 2 पॉइंट लेकर आए। तो हमने बात ही की थी कि आज राम कुमार एक बार फिर से मेन रेडर के तौर पर अपनी टीम के लिए कार्य करेंगे, और वो कार्य करते हुए अच्छी तरह से नजर आ रहे हैं नवीन। Very much. And today, even if his speed is not on the mark, what the defense issues with Periyar Panthers is, he is able to get a few raid points to his name. And that is nice. Govind Gurjar now with the dash, and Rinku has been pushed out. But still, 2 points, I guess. Yeah. Sumaji says wait in the principal fashion. I like the tone. Wait. और शायद क्या यहाँ पर मिडलाइन को क्रॉस कर दिया था जब वहाँ पर हवा में थे। क्या यहाँ पर जरूर किस तरह से, जी हाँ, जर्सी नंबर 77 यानी कि गोविंद गुर्जर आउट हुए हैं। 1 पॉइंट जरूर यहाँ पर पेरियार पैंथर्स को मिला है नवीन। Yeah, see, it was a good intention, of going for the dash, but somewhere the raider, okay, not a problem. Rinku had that in the air, but it is not a weak tackle. It is not a bad tackle, and this, I will say,
is a very weak plus bad plus unwanted tackle. अच्छा, ये बड़ा आपने सही शब्द यूज किया, अनवांटेड, और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए हमने युवा कबड्डी सीरीज में देखा है जिस तरह से टैकल्स की समय होता है और हर चीज का एक समय आता है नवीन, जिस तरह से चाहे जिंदगी हो चाहे खेल हो, हर एक चीज का वो समय होता है, चाहे जवानी हो उसका भी एक समय होता है और समय को यहाँ पर जिस तरह से यूज, और इस बार देखना होगा गोविंद गुर्जर फिर से, अब देखिए पोजीशन में फिर से बदलाव है नवीन। गोविंद गुर्जर आपको राइट कॉर्नर के साथ राइट एंड पर नजर आ रहे हैं, शायद एंकल होल्ड को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, परंतु ये आप नहीं देखना चाहते हैं लगातार। Yeah, and there you go, Jwalaram. That is nice. In the defense of 3, he goes in very quickly from the left flank and then gets the only raider who was not in the chain there. Monu Jakar has to go back, and now it's just Rinku left on the mat to save his team, the captain. He does not want a second all out in the second half. That's very advanced. It was somewhere saying, okay, just save few men from your court. And look at that, right in. Why do you have to do that, Govind Gurjar? Come on. And why did you always, just go and stand in the right in position? I understand if you have to surprise a raider. It was the left raider. Rinku is the left raider. If you have to surprise him, come to the left in position. Why in a right in position? Come on. And Ramkuvar is doing his best. Ramkuvar is really doing his best. See, I'll tell you something. If Govind Gurjar would have been in his peak form, no, this lead wouldn't have just been 7 points. बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा नवीन, और इसी तरह का प्रदर्शन अब जरूर देखना होगा। एक बार फिर से पोजीशन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बात की कि अगर आप सरप्राइज करना चाहते हैं, बिल्कुल अगर आप सरप्राइज करना चाहते हैं तो आपको वहां पर लेफ्ट फ्लैंक में होना चाहिए था, जहां पर शायद अभी तौसीफ अहमद मौजूद है, परंतु शायद वहां पर गोविंद गुर्जर अपने एंकल होल्ड को और भी ज्यादा बेहतरीन समझते हैं कि शायद वहां पर एंकल होल्ड की लगातार प्रयास कर रहे थे। परंतु चलिए राम कुमार की आप बात कर रहे थे, जिस अंदाज में उन्होंने प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए वो सच में काबिल तारीफ है, और शायद ये उनका 17th रेड पॉइंट होगा नवीन, 17th रेड पॉइंट होगा। And Ujjwal again showing the inexperience of raider going for the defense. Look at that. He's not going for the legs, he's going for the hands. So that is where you'll have to again nurture your skills a little more, even if you're a raider. Just somewhere get those defensive skills. Now Rinku is trying to save the team. हर्षित, आपको क्या लगता है? जल्दी बोलिए, सेव कर पाएंगे कि नहीं? मुझे लगता है करेंगे, क्योंकि गोविंद गुर्जर is looking very anxious. He is looking anxious. There, look at that. I'm feeling that he will give away a point, but Gangaram says, no way, Naveen Shauri, I will not let your words come true. And a very strong left cover thigh hold by Gangaram. जी हाँ, बिल्कुल आसानी के साथ इस बार गंगाराम ने कहा कि मेरे बारे में चर्चाएं लगातार हो रही है, परंतु मैं कवर पर खेल सकता हूँ गाइस, लेट्स सी मी, मैं खेल सकता हूँ कवर पर। देखिए गंगाराम बिल्कुल अच्छा कार्य यहाँ पर किया, परंतु जो कार्य आपको दिया गया है अभी आप एक बहुत अच्छे सपोर्ट में रेडर के तौर पर भी नजर आ रहे हैं। जरूर अगर गोविंद गुर्जर या कपिल गुर्जर में से कोई मौजूद नहीं है कोर्ट पर तो आप जरूर वहां पर कवर खेल सकते हैं, परंतु जब अगर वो मौजूद हो तो आप उन दोनों को अपनी सर्वश्रेष्ठ जगह पर खेलने का मौका जरूर देंगे। इसी के बीच में तौसीफ अहमद एक और पॉइंट लेकर आएंगे, इस तरह से वापसी नहीं कर सकता है। देखिए सिंगल हैंडेड वहां पर जाना चाहते थे, पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि कहां पर किस तरह से और किस स्किल्स के साथ टैकल करना है। Yeah, if you remember, because I am not able to recall this, because Periyar Panthers did not have an issue in the left corner. They were actually doing it really nicely with Ashish Malik being there. And Ashish Malik is there in substitute today. And why play with Ankit Surender, who is actually struggling, and when your team is lagging behind by now 11 points, and Monu Jakar is somewhere gotten that point. That's nice. So it's going to be 2 points. That is nice. Really nice. We'll have to see whom did he target. Oh, come on, Ram Kuvar. Ram Kuvar, the culprit there, standing in the center position, going for the ankle hold. The idea was right, but then the execution also needs to be really spot on. Like Naveen Sharma, the strong ankle hold on Jwalaram. He has to go back on the bench. जी हाँ बिल्कुल, इस बार एक बहुत अच्छा टैकल, और आपने बिल्कुल सही वहां पर विषय उठाया नवीन की लेफ्ट कॉर्नर
थोड़ी सी वहां पर बिल्कुल भी चर्चाजनक विषय था नहीं पेरियार पैंथर्स के लिए। जब आशीष मलिक आपके लिए अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, आज अंकित सुरेंद्र को मौका मिला है, उतना अच्छा प्रदर्शन अंकित सुरेंद्र वहां पर उस क्रम पर कर नहीं पाए। बहुत अच्छी जंप जरूर थी, परंतु एक शानदार टैकल यहाँ पर महेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि अरावली एरोज के लिए भी राइट कॉर्नर बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है। शानदार डबल जंप किया। Yeah, how many times have we seen Mahendra Chaudhary do this? He's done it against Partik Dhaya, he's done it against Ashish Narwal, and he's done it again today. So that is nice, where you have the confidence. He's also put it against Ashu Malik, if I'm not wrong. You know, it is nice that he's got those skills. It is really good for Mahendra Chaudhary to grow in confidence, because it's not easy. It's not an easy tackle, and going in front of the raider, and when he's jumping, catching him in mid-air and pinning him down, pulling him down on your shoulders, it is a lot of strength that goes into that tackle, and Mahendra Chaudhary does it really well. Govind Gurjar now will be trying to show that he can also raid. जी हाँ, परसूट करते हैं वहां पर नजर आए, बहुत जल्दी से यहाँ पर गए जरूर हैं, और देखना होगा इस बार क्या अब जरूर शायद ज्यादा अंदर जाने का प्रयास न करें, ज्यादा डीप जरूर शायद अब नहीं जाना चाहेंगे। 8 पॉइंट की लीड अरावली एरोज के पास अभी भी है, 4 मिनट से कम का समय शेष है। नवीन शर्मा ने जरूर डिफेंस में अपना हाई फाई पूरा किया है, अनीश ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, 3 टैकल पॉइंट्स वो भी अपनी टीम के लिए यहाँ पर लेकर आए। जरूर अब टाइम आउट है, अरावली एरोज की तरफ से टाइम आउट यहाँ पर बुलाया गया है, और क्या उनके कोच शंकर अब इस समय कह रहे होंगे, नवीन आपको लगता है? See, if you get a chance, you will have to speak to Shankar ji and understand why those shifting of the position happens, like change of I should say change of cards every single time. When you are playing a good card game, you keep flipping your cards, you keep shuffling your cards, and but in a good kabaddi game, so much shuffling doesn't work out, and they have realized that, but they don't seem to understand the hard fact that it's going to be difficult. Right, they are in the lead now. Why are they in the lead? It's not because of their shuffling, it's because they're stuck to basics. They've just said, okay, everybody has their own work to do, and look at that once again, the Gurjar Bhaichara in the chain in the left flank. Rinku will try to go attack that, and tries his flying hand touch, does not get it, goes in deep. Kapil Gurjar puts a strong ankle hold, which was initially escaped by Rinku, but then the support came in at the right time. See, so much effort. Yeah, so much effort goes in. Look at that. Look at the effort that has gone in. And if then go their proper position, do you see so much effort? No. The tackle looks so simple and easy. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, परंतु अब यहाँ पर थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा राम कुमार, क्योंकि डू और डाई रेड है इस बार। दिस इज द पावर, या फिर किसका ये शोकेस किया है, द प्रॉपर शोकेस ऑफ स्ट्रेंथ। नवीन बिल्कुल यहाँ पर शायद किया, सिर्फ 2 पॉइंट्स है, जरूर क्या यहाँ पर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हुआ है। नवीन शर्मा जो टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्या शायद आंख में उनका कुछ राम कुमार जब आ रहे थे कुछ हिस्सा लगा। नवीन एक चिंताजनक विषय हो सकता है। Yeah, Sumanji also is not very happy with that, but yeah, but that was not intentional. That was not intentional. Look at that. Once again, he goes to break the chain, and once again, it was the power of breaking the chain. It was good by Naveen Sharma once again to go with the chain, this time very strong and hard, but that is happening for the second time today. So he's got some skills also that other raiders can pick up and say, okay, how do you break a chain? But you have to be very strong like Jay Bhagwan or Ram Kuwar, you know. But thanks to our physio partners, UEM, who immediately came rushing into the court and took him away, took Naveen Sharma away, and the running hand touch now for Ram Kuwar. And has to be said that now Periyar Panthers are not even looking like scoring that 1 point. Manoj Yadav was substituted, could not go back in time. जी हाँ, राम कुमार एक बार फिर से गए, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने टच पॉइंट यहाँ पर प्राप्त किया है, परंतु जब जिस तरह से बात कर रहे थे नवीन शर्मा, देखिए बड़ी क्रूशियल स्टेज पर यहाँ पर अब बूस्टर राउंड है। देखिए बूस्टर राउंड जरूर अब बहुत ही जल्द चैलेंजर राउंड वहाँ पर शुरू होगा। नवीन तो पेरियार पैंथर्स के लिए हमने कल आशीष नरवाल को यहाँ पर फिट एंड फाइन देखा, गोविंद गुर्जर ने कहा चलिए मैं रेड कर सकता हूँ, ये देख लीजिए आप मेरी स्किल्स। बहुत अच्छा जंप लगाया, जिस तरह से आप कहते हैं फ्रॉक जंप प्लस हनुमान जंप वहां पर नजर आया।
और ये देखिए Yeah. बहुत सही तरीके से साथ। And once again, who's struggling? Once again, who's struggling? It's Ankit Surinder. Ankit Surinder, who went into raid just previously to that defense. Govind Gurjar went in and did not allow him to settle down. And now a strong ankle hold on Raman. Once again, Periyar Panthers have been pushed to all out. And Mohit, the coach of Periyar Panthers, will be actually dialing on his phone Ashish Narwal. अबे कहाँ हो, क्या हो रहा है? That was the message that is going on to him. जी हाँ बिल्कुल, और इसी के बीच में सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात हुई है तो 3 आउट 4 इन आशीष मलिक को अब अंदर बुलाया गया है। नवीन शर्मा जरूर यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं तो जरूर यूईएम निश्चित तौर पर वहाँ पर चाह रहा होगा कि बिल्कुल क्लोजली उसे देखा जाए कि सबसे पहले कि कहाँ लगी है, किस तरह से, क्या ज्यादा। देखिए आंख में कितना सेंसिटिव होता है नवीन। देखिए आप बड़ी ऐसा मुझे तो स्पोर्ट्स इंजरीज स्पेशलिस्ट नजर आते हैं, आपसे जानना चाहूंगा नवीन कि किस तरह See, से again, आपको कितना more than Naveen Sharma's sore eye, for me the sore place is the left corner today for Ankit Surinder. Look, just see the way he just surrendered onto that tackle in the previous one, and that is nice. That is nice. That's the aggression that I love to see from Mohit ji. The way he sends a raider or a defender inside, he says, "Chal, abhi kuch dikha karke." That is what the facial expression read, and that was completely for Ankit Surinder. Nobody else but Ankit Surinder. He's got a good opportunity today, and Gangaram has been tackled by Manoj Yadav. Finally, somewhere the substitution working out from left cover. Proper block, and Gangaram, he could not get the angle, Harshit. Yeah, but just talking about Naveen Sharma's eyes. Yeah, of course, the most sensitive part in the face is definitely going to be the ears and eyes. And I'm sure, there should be just one finger that has gone into the right eye of Naveen Sharma. I'm sure it should not be a very big injury because it was not a punch or something. And once again, Govind Gurjar fails from left corner. It's so easy for Rinku to go and attack. Look at that. Why the point was taken? Because the Gurjar Baichara is on the left flank. Okay, whatever. So, just talking about the eyes, very important. And I'm kind of concerned because he's not come back on the mat. So, I just want to see how much of the disturbance that it will be causing. Because you're not comfortable, isn't it? In the eyes until and unless that redness goes off, you're not comfortable. And definitely not comfortable is Ankit Surinder. I want to see what Mohit ji tells him when he goes to the bench. I really want to see that expression. And look at that. How many times? And where is Ashish Malik today, Harshit? जी अब जरूर आपको वहां पर कोर्ट पे देखने को मिले आशीष मलिक, परंतु बिल्कुल आपने सही कहा कि अंकित सुरेंद्र और लोकेश गुसलिया इस बार कोई मौका नहीं देंगे। वो कहेंगे कि चलिए अरावली एरोज की कॉर्नर्स में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आएगा। एक और बार बहुत ही शानदार वहां पर टैकल, और बिल्कुल आपने सही कहा कि आज क्यों यहाँ पर आशीष मलिक को अपने स्टार्टिंग 7 में नहीं देगा। क्या शायद कोच एक बार ट्राई आउट करना चाहते थे अंकित सुरेंद्र के साथ। आशीष मलिक ने पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नवीन शर्मा के साथ जो दोनों की कॉर्नर का कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत अच्छा नजर आता है। आज अनीश ने फिर से अच्छा किया है। अब आशीष मलिक वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नजर आ रहे हैं आपको। Yeah. Running at touch. Oh, careful while raiding, and you should be very, very careful, of course, of the lobby. Tausif Ahmed. That's fine. It's okay. You can go into the lobby, not get injured. See, your team is leading. It's fine. See, I understand the Josh, Jazba and Junoon, but controlling so much is always injury prone. I would have not said that if the team was just lagging behind. But even then, it was dangerous. So the young Yuva Kabaddi heroes really need to understand and be safe from injury. But again, just talking about Ankit Surinder today. See, I'm not against anybody. I do not pick any player just to kind of say, okay, it's not happening, it's not right and all that. What I really want to tell here is, for all our viewers watching on fan code, is Arshit. See, when you get an opportunity, it is out of many. Like say, for example, out of 1,000 plate of 1,000 noodle strands in a noodle plate, you are getting that one golden strand. एक मतलब आपको सोने का एक नूडल मिल रहा है एक बड़ी नूडल्स के प्लेट में. That is how a chance
to play on this wonderful match is. And when you get that chance, I understand if you make mistakes initially, 1 or 2 mistakes or even 3-4 mistakes is fine. But then you have to come back in the same match. And when you don't come back, only then I will try to think like a coach and see what are my substitutes. Because I do not want somebody's weak form to cause the game for the team. Whether it is Periyar Panthers or Mursal Magnets or whether it is even Maratha Marvels, the bottom lying team, that doesn't concern me. What concerns me is when you do not take up the opportunity that is coming your way. That is what is somewhere worrying to me. And आप बोलो कितनों को ये मौका मिलेगा to play in such a wonderful setup, beautiful floodlight and international standard of production. कितनों को मौका मिलेगा? जब वो मौका मिलेगा तो पूरी हाथ से तो लेना पड़ेगा ना. That's my concern. जी हाँ, बिल्कुल. अगर आपको मौका मिला है दोनों हाथों से आपको कबूल ना होगा और अच्छी तरह से उसका आउटकम देना होगा अपनी टीम को. और चलिए मुकाबला जरूर अब समाप्त हुआ है. अरावली एरोज ने इस मुकाबले को एक अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीता है. 35 रेड पॉइंट्स है यहाँ पर, जिसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन राम कुमार का रहा, जिसमें 26 रेड पॉइंट जरूर पेरियार पैंथर्स को मिले. टैकल पॉइंट्स में भी आगे नजर आई है, ऑल आउट पॉइंट्स में भी यहाँ पर अरावली एरोज आगे नजर आई है. परंतु मैं आपसे नवीन जो स्टैंड ऑफ कबड्डी गेम यहाँ पर दे रहा है युवा कबड्डी सीरीज, देखिए बूस्टर राउंड का लगभग समाप्ति की तरफ जा रहा है, परंतु इसके बावजूद नवीन 1-2-7 8वां पायदान जरूर अंक तालिका पर देखिए आपको यही नजर आएंगे. मराठा मार्वल्स, पेरियार पैंथर्स ये मुकाबला हारे तो जरूर शायद पहले पायदान पर हमें के लिए मुश्किल होगा, परंतु देखिए इसके अलावा सातों की सातों टीम्स में उनके अंकों में और उनके पायदानों में बदलाव अभी हो सकता है. नवीन, सातों की सातों पायदानों में बदलाव हो सकता है. Apart from Maratha Marvels, you see the bottom three. I will just request this points table to be a little more royal, a few more seconds on this as we discuss. It's very, very important. 34 for Kaziranga Rhinos, Tadabo Tigers and Panchala Pride. So what that suggests is the top 3 places is somewhere up and down for the prize money that will be coming in when they move in from the booster round to the challenger round. But if some team has to go out from the 34 position, Ampi Heroes has to be really careful because they are on 33. Because they are on 33 and the points per match is really important. Humpy Heroes' next game against Mursal Magnets is very, very important, or else they will be pushed down. They will be pushed down for say number 7. That is a very big match coming up in a short while from now. Please do not go away too far away, I should say. Yeah, just come back at 8 p.m. and I am Navin Chaudhary along with Harshit will be waiting for you on Fan Code. Thank you so much.